Good morning, children. Good morning, children. So last time we did up to fourth part of question number 6. So today I am continuing with seventh part. Today I am taking seventh part of exercise 14B, question number 6. So this is the figure given in the question. We have to find the values of x, y, z, p and q. Now class, see here, y and 110, these are vertically opposite angles. So the value of y is 110, reason being they are vertically opposite angles. Then see, if this is 110, we can find the value of this angle. Let me name this angle as A. Now, A plus 110 is 180 because they are co-interior angles. So, these must be supplementary. So, the value of A will be 180 minus 110, which is 70 degree. So, this is the value of A. Now, you see here that A and Z are vertically opposite angles. Therefore, Z is equal to A equal to 70 degree because these are vertically opposite angles. Okay. Now we have found the value of Y and Z. So now let us move on to the Q. Now you see here 120 and Q, these are a pair of corresponding angles. Okay, then 120 and P, these are co-interior angles again. So 120 plus P is equal to 180. Again co-interior angles. So P is equal to 180 minus 120, that means 60 degree. Now beta, X and P, these are a pair of alternate interior angles. X is equal to P, both are 60 degree because these are a pair of alternate interior angles. So I think we have found all the values. Yes. So this is how we will proceed. Basic thing is we should know about the angles, as I told you last time, in the case of parallel lines and transversal. Now I am taking 8th part, question number 6, 8th part. This is the figure. This angle is 120. This is Y, this is Z, 75 and X. Okay, so we have to find the value of X, Y, Z in this question. Now what I see here, these two are parallel lines. This is the transversal. So this 120 and this complete angle. This complete angle means Z plus 75. So Z plus 75, which I am taking as a complete angle here above this line, and this 120. They will be equal because these are corresponding angles. लाइन के ऊपर है, ये भी लाइन के ऊपर है, तो ये हो गए हमारे corresponding angles. Okay. अब यहां से बेटा हम Z की वैल्यू निकाल सकते हैं. Z हमारा हो जाएगा 120 माइनस 75. तो Z की वैल्यू आ गई 45 डिग्री. अब Y जो है वो तो 75 के इक्वल होगा. ये ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स का पेयर है क्योंकि ये हमारी ट्रांसवर्सल है. सो Y इज इक्वल टू 75 डिग्री. दीज आर ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स. Okay, now only X is remaining. Okay,
To find the value of x, I am taking the concept of straight angle. Also, z plus 75 plus x is equal to 180 डिग्री. स्ट्रेट लाइन के ऊपर बन रहे हैं तीनों एंगल्स, तीनों का सम 180 होना चाहिए. z आपका है 45, वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे और x फाइंड आउट करेंगे. तो हमारा x आ रहा है 180 माइनस 120, दैट मीन्स 60 डिग्री. ठीक है, ये हो गया है आपका 8th पार्ट. नाउ आई एम टेकिंग 9th पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन. Ninth part. In this case, the figure is like this. We are having a triangle in the middle of two parallel lines. Then here we are having three angles A, B and C. This is 115 and this is 120. Now beta see here, these two are parallel lines, this is transversal. So A and 115 on the same side of transversal, so they form a pair of co-interior angles. Okay, so let us find the value of A from here. 180 minus 115, it will be 65 degree. Okay, now similarly we can find the value of angle C also, because C and 120, they also form a pair of co-interior angles on the right hand side of this transversal. Also C plus 120 is 180, again co-interior angles, so C will be 180 minus 120, that means 60 degree. Now we have found the values of A and C. Now we can find the value of B. How can we find the value of B? With the concept of straight angle property, है ना. straight angle बन रहा है ये straight line के ऊपर. So now A plus B plus C is 180 degree straight angle. A is 65, C is 60. So we can find the value of B. So B will be 180 minus 125. It is 55 degree. Okay, so we have found all the values of A, B and C. Now the next part which I am taking from this question is 11th part. Figure is like this. This angle is 160. This is X, this is Y, and this is 130. Now beta, in this question these two are parallel lines, but the problem is that we are not having any transversal, है ना, because this is the line which is meeting this line but not this line. This is the line which is meeting this line but not this line. So we are not having any transversal. So what we have to do is we have to draw a transversal ourselves in the middle here, and I am drawing this line parallel to both the lines. Okay, draw a line in the middle which is parallel to both the lines. Okay, now beta see here, these two are parallel lines. This is the transversal now because it is meeting both the lines. So 160 plus this angle. What is this angle? This angle I am naming as A. Okay, A is this angle only. So 160 plus A will be 180 degree. Because these are co-interior angles.
So now we can find the value of A. It will be 180 minus 160, that means 20 degree. Now similarly I am naming this angle, which is this side. This I am naming as B. Okay, so this angle I am naming as B. Also, if we look at the below figure, these two are parallel lines. This is the transversal. So 130 plus B will be 180. Again, they are a pair of co-interior angles. So B is 180 minus 130, it is 50 degree. Okay, now if we add A and B, we will get the value of X, है ना, because X is the complete angle here. Therefore, X is equal to A plus B, that means 20 plus 50, and this is 70 degree. Now we will find the value of Y. Now let us see here, at this point we are having two angles, X and Y. So this is complete angle concept. Now X plus Y is 360 degree. This is complete angle. So X is 70. 70 plus Y will be 360. So it will be Y is equal to 360 minus 70. That means 290 degrees. So this is how you will find the values of X and Y in this question. Now these parts I have taken from question number 6. Rest of the parts which I have not taken, that you will do yourself. Now I am taking question number 7. Question number 7, I am taking first part of it. So this is the figure we are having. We have to find the values of X, Y, Z and P. Okay. So now beta, first see here. First I will find the value of X. How we will find the value of X? If you see here beta, at this point we are having these three angles. This is 270, this is X and this is 40. So this is a case of complete angle. Sum of all these three angles should be equal to 360 degree. So X plus 270 plus 40 is 360 degree because this is complete angle. Now we will find the value of X from here. So X will be 360 minus 310, that means 50 degree. Okay, so after finding the value of X, you can see here that X and Z, ये दोनों आपकी पैरेलल लाइन्स हैं, ये ट्रांसवर्सल है, तो X और Z आपके कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स का पेयर है, तो X इक्वल टू Z, ये भी 50 हो जाएगा, बिकॉज दीज आर कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स. अच्छा, X हो गया हमारा, Z हो गया. अच्छा बेटा, अब आप इधर देखो, अगर ये और ये आप पैरेलल लाइन लेते हो और इसको ट्रांसवर्सल लेते हो, तो ये वाला एंगल और ये वाले एंगल ये आपके हैं कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स. अगेन X प्लस 40 Z प्लस Y के इक्वल होगा. क्यों? क्योंकि ये कौन से एंगल्स का पेयर है? ये हम पूरे एंगल्स की बात कर रहे हैं. X प्लस 40 मीन्स ये पूरा एंगल और Z प्लस Y का मतलब ये पूरा एंगल, क्योंकि ये भी कौन से एंगल्स का पेयर है?
कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स का। अब हम वैल्यूज पुट करेंगे। x हमारा 50 है, 50 प्लस 40, z हमारा 50 है, 50 प्लस y, सो 90 इज इक्वल टू 50 प्लस y, सो 90 माइनस 50 हमारा y हो जाएगा 40। ओके, सो हमारे दो x, y, z तीन निकल गए हैं। नाउ वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ p। बेटा अगर आप ध्यान से देखो तो ये आपकी एक स्ट्रेट लाइन जा रही है, तो p और z आपका स्ट्रेट एंगल बना रही हैं, तो इनका सम कितना होना चाहिए? 180। नाउ p प्लस z इज 180, दिस इज स्ट्रेट एंगल, तो p प्लस z आपका है 50 इज 180, so p will become 180 minus 50, that means 130 degree. Okay, so we have done first part of question number 7. Second you will try at home. Now I am moving on to question number 8. क्वेश्चन नंबर 8 में भी हमने x की वैल्यू फाइंड करनी है। हियर वी हैव टू फाइंड ओनली वन वेरिएबल, दैट इज x. आई एम टेकिंग फोर्थ पार्ट ऑफ इट. फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड you will try yourself. This is a parallelogram which is given in the question as this line is parallel to this line and this is parallel to this. Now the angles which are given to us is this 2x plus 5 and this 3x plus 55. Beta, if I take these two parallel lines, then this will be the transversal. So the sum of these two angles will be 180 degree because they form a pair of co-interior angles. ये transversal है, transversal के right hand side पे दोनों angles अंदर की तरफ बन रहे हैं. So these are co-interior angles. तो 3x plus 5 और दूसरा है आपका, सॉरी 3 नहीं है, पहला 2 है, 2x plus 5 और दूसरा है आपका 3x plus 55. दोनों का सम कितना है? 180 because these are a pair of co-interior angles. अब 2x plus 3x हो जाएगा आपका 5x, 5 और 55 का सम हो जाएगा 60, तो 5x हो जाएगा आपका 180 minus 60, 5x is 120, so x will be 120 by 5 is 24 degrees. ठीक है बेटा, ये आपका x निकल गया है, क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है. अब हम इसके नेक्स्ट पार्ट पे आ रहे हैं, विच इज फिफ्थ पार्ट. फिफ्थ पार्ट में हमें फिगर ऐसी गिवन है. These are the two parallel lines and this is the transversal. Angles are 3x plus 25, this one, and the next is 2x plus 20, this one. बेटा इसमें हम क्या कर रहे हैं, मैं इसमें ये एंगल फाइंड कर रही हूं, इसको मैं A नेम दे रही हूं बिकॉज वी नो दैट these two angles are vertically opposite angles. तो आपका 3x plus 25 आपका A के इक्वल है क्योंकि ये आपके vertically opposite angles का पेयर है. अब ये तो आपका A की वैल्यू निकल गई. अब आपका A जो है वो इस एंगल के को इंटीरियर एंगल है क्योंकि ये ट्रांसवर्सल है, सेम साइड पे बन रहे हैं. तो A जो है 2x plus 20 के साथ कितना सम देगा? 180 because they are a pair of co-interior angles. अब A की वैल्यू हमने क्या लिखी है? 3x plus 25 क्योंकि ये वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स थे, तो A की जगह पे लिखा 3x plus 25. अब हम इस इक्वेशन को सॉल्व करके x की वैल्यू निकालेंगे. 3x plus 2x 5x, 20 plus 25 45, तो 5x आपका आ जाएगा 180 minus 45. So your x is 135 by 5, 27 डिग्री. ठीक है, ये हो गया आपका इसका फिफ्थ पार्ट.
And the last part which I am taking from this exercise is sixth part of this question. Figure is like this. So these two are the parallel lines. This angle is 4x. This is 6x. And this middle angle is 130 degree. Here again, I am drawing a line which is parallel to both the lines. जैसे हमने एक पहले क्वेश्चन में किया था, यहां पर भी क्योंकि कॉमन ट्रांसवर्सल दोनों पैरेलल लाइंस के लिए कोई नहीं है, हम यहां पर एक बीच में से एक लाइन ड्रॉ करेंगे विच इज पैरेलल टू बोथ द लाइंस. ड्रॉ अ लाइन फ्रॉम कॉमन वर्टेक्स which is parallel to both the lines. ठीक है. नाउ बेटा अब मैं फिर इस एंगल को नेम दे रही हूं, इसको A दे रही हूं, इसको B दे रही हूं, क्योंकि हमें इन एंगल्स की जरूरत पड़ेगी. अब 4x जो है आपका वो A के इक्वल है, क्योंकि ये आपके कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स है. देखो ये लाइन, ये ट्रांसवर्सल हो गई, ये ऊपर वाला. तो 4x किसके इक्वल है? A के इक्वल है. कौन से एंगल्स हैं ये? कॉरेस्पॉन्डिंग. ठीक है. ऐसे अगर मैं नीचे की इन दोनों पैरेलल लाइंस को देखूं तो ये ट्रांसवर्सल है, ये लाइन के नीचे, तो B जो है वो किसके इक्वल है? 6x के. ये भी कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स है. ठीक है. तो A प्लस B किसके इक्वल है हमारा? 130 के, क्योंकि ये कंप्लीट एंगल हमें 130 गिवन है. सो नाउ A प्लस B इज 130. क्वेश्चन में गिवन है हमें. A कितना है? 4x. B कितना है? 6x. So 4x plus 6x is 130. That means 10x is 130. So x will be 130 by 10. That means 13 degrees. Okay. So beta, this completes our exercise 14B. I have tried to take different types of questions and the difficult questions from this exercise. You have to practice the remaining questions at home. And you can ask your doubts in the next class when we will meet on Wednesday. And on Wednesday, we will start the new chapter 15. Okay. So goodbye for today.